everybody, I'm Dhruv Fredu from Study Life. So today we are organizing a quiz on Geography Chapter 2. So here it is our first question. Now let's see it. Question number 1. In which of the following continent Tanzania situated? इन सभी कॉन्टिनेंट में से जो टेंजानिया वो कौन से कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है लोकेटेड है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका या ऑप्शन डी साउथ अमेरिका. So the correct answer is option C, Africa. क्वेश्चन नंबर 2. पीटर लिव्स इन विच कंट्री? जो पीटर है वो कौन सी कंट्री में रहता है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड या ऑप्शन डी अमेरिका. So the correct answer is option C, New Zealand. क्वेश्चन नंबर 3. लैंड इज यूज्ड फॉर. लैंड कौन कौन सी चीज़ों के लिए यूज होता है? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी फॉरेस्ट, ऑप्शन सी माइनिंग या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. So the correct answer is option D, all of these. Question number 4. The use of land is determined by physical factors such as. Option A topography, option B soil and climate, option C availability of water या option D all of these. So the correct answer is option D all of these. Question number 5. How land can be classified? Land कैसे classify हो सकता है? ऑप्शन ए ओनरशिप से, ऑप्शन बी कैपिटल से, ऑप्शन सी प्लेस से या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज से. So the correct answer is option A, ownership. Question number 6. What are the two types of ownership? ओनरशिप के कितने जो दो टाइप्स है वो कौन से? ऑप्शन ए प्राइवेट लैंड, ऑप्शन बी कम्युनिटी लैंड या ऑप्शन सी बोथ एंड बी. So the correct answer is option C, both A and B. Question number 7. Private land is owned by whom? Private land किसका होता है? ऑप्शन ए ओनर, ऑप्शन बी इंडिविजुअल, ऑप्शन सी कम्युनिटी या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. So the correct answer is option B, individual. Question number 8. Community land is owned by whom? कम्युनिटी जो लैंड होता है वो किसका होता है? अभी ऑप्शन ए कम्युनिटी का होता है, ऑप्शन बी इंडिविजुअल का होता है, ऑप्शन सी ओनर का होता है या ऑप्शन डी गवर्नमेंट का होता है. So the correct answer is option A, community. Question number 9. कम्युनिटी लैंड इज यूज फॉर कॉमन यूजेस लाइक. कम्युनिटी लैंड जो है वो कौन कौन से यूजेस के लिए यूज होता है? ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ फॉडर, ऑप्शन बी फ्रूट्स एंड नट्स या ऑप्शन सी मेडिसिनल हर्ब्स या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. So the correct answer is option D, all of these.
So here is our question 11. Community lands are also known as. कम्युनिटी लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब उनका दूसरा नाम क्या है? कम्युनिटी लैंड को किस नाम से जाना जाता है? कॉमन रिसोर्स से जाना जाता है, ऑप्शन बी गवर्नमेंट लैंड से जाना जाता है, ऑप्शन सी गवर्नमेंट रिसोर्स से जाना जाता है, या ऑप्शन डी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स से जाना जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स कौन से हैं? ऑप्शन ए लैंड डिग्रेडेशन, ऑप्शन बी लैंडस्लाइड्स, ऑप्शन सी सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। So the correct answer is all of these. Question number 12. Land covers how much percent of total area of earth? लैंड जो है कितना परसेंट को कवर करती है पूरे अर्थ में से कितने परसेंट को? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 60, या ऑप्शन डी 70। So the correct answer is option A 30. Question number 13. The breaking up and decay of exposed rocks is called. Option A soil, option B weathering, option C organic matter, option D none of these. So the correct answer is option B weathering. Question number 14. The thin layer of grainy substance covering the surface of earth is called. Option A weathering, option B soil, option C organic matter. So the correct answer is option B soil. क्वेश्चन नंबर 15. सॉइल इज मेड अप ऑफ. सॉइल किस चीज़ से बनी है? ऑप्शन ए ऑर्गेनिक मैटर से बनी है, ऑप्शन बी मिनरल से बनी है, ऑप्शन सी वेदर रॉक से बनी है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी चीज़ों से बनी है। So the correct answer is option D all of these. क्वेश्चन नंबर 16. बाय व्हाट मिक्सिंग द सॉइल गेट्स फर्टाइल? क्या चीज़ मिक्स करने से जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है? ऑप्शन ए मिनरल एंड सॉइल, ऑप्शन बी सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर। So the correct answer is option D mineral and organic matter. Question number 17. Soil take how many years to form again? Soil को कितने years लगते हैं वापस बनने के लिए? ऑप्शन ए 1 year, ऑप्शन बी 10 years, ऑप्शन सी 100 year, ऑप्शन डी none of these. Question number C 100 years. In 100 years, how many soil gets replenished? 100 साल में कितनी जो soil है वो replenished होती है? ऑप्शन ए 1 मीटर, ऑप्शन बी 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1 मिलीमीटर, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर बी 1 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 19. हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन सॉइल प्रोफाइल? सॉइल प्रोफाइल में कितनी लेयर्स रहती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 4।
So the correct answer is option D, common property resource. Question number 20. A drinking tap water how much लीटर इन 1 year? अगर जो ड्रिंकिंग टैप का वाटर है वो कितना हो जाता है 1 लीटर में 1 year? ऑप्शन ए 1200, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1000 या ऑप्शन डी 2500. So the correct answer is option A 1200. Question number 21. What are the major threats to soil as a resource? मेजर थ्रेट्स कौन कौन से हैं सॉइल को रिसोर्स की तरह से? ऑप्शन ए सॉइल इरोजन, ऑप्शन बी डिप्लीशन, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. So the correct answer is option C both and B. Question number 22. What process helps to retain soil moisture? कौन सी प्रोसेस जो है जिसकी मदद से हमें सॉइल मॉइस्चर रिटेन होता है? ऑप्शन ए मल्चिंग, ऑप्शन बी इंटरक्रॉपिंग, ऑप्शन सी शेल्टर बेड्स या ऑप्शन डी रॉक डैम. So the correct answer is option A mulching. Question number 23. The process of collecting rainwater from roof and storing it is called what? Option A rain, option B rainwater harvesting, option C rock dam, option D dam rain. So the correct answer is option B rainwater harvesting. Question number 24. Trees are planted to check the movement of wind is called. Option A shelter beds, option B rock dam, option C mulching. So the answer is option A shelter beds. Shelter beds. Question number 25. Rocks are built to slow down the flow of water. Option A shelter beds, option B rock dam, option C mulching. So the correct answer is option B rock dam. Question number 26. On an average, one spell of rain for 2 hours saves how much liter? Option A 5000, option B 10,000, option C 7500, option D 8000. So the correct answer is option D 8000. Question number 27. The narrow zone of atmosphere, hydrosphere and lithosphere is called. Option A biosphere, option B diosphere, option C both and B. So the correct answer is option A biosphere. Question number 28. Which is a vital renewable natural resource? Option A soil, option B water, option C land, option D none of these. Option B water. Question number 29. Water covers how much area out of 4 parts of earth? Option A 3 upon 4, option B 1 upon 4, option C 2 upon 4, option D
None of these. So the correct answer is option A, 3 upon 4. Question number 30. Water covers how much percent of earth? वाटर जो है कितना परसेंट कवर करता है अर्थ का? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 80. So the correct answer is option C, 70%. Question number 31. How much fresh water is present in earth? कितना fresh water earth में present होता है? ऑप्शन ए 2.7, ऑप्शन बी 1.5, ऑप्शन सी 2.5 या ऑप्शन डी 3%. So the correct answer is option A, 2.7%. Question number 32. How much water we can use from fresh water? हम लोग fresh water से कितना परसेंट वाटर यूज़ कर सकते हैं? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 4% या ऑप्शन डी 5%. So the correct answer is option A, 1%. क्वेश्चन नंबर 33. वाटर इज यूज फॉर? वाटर किस चीज़ के लिए यूज होता है? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स? सॉइल को रिसोर्स के तौर पर कितनी थ्रेट्स पहुंचती है? ऑप्शन ए सॉइल डिग्रेडेशन, ऑप्शन बी सॉइल इरोजन, ऑप्शन सी बोथ एंड बी. So the correct answer is option C, both A and B. Question number 35. What are the major groups of vegetation? Vegetation के total कितने groups हैं? Option A 1, option B 2, option C 3 या option D 4. So the correct answer is option D 4. Question number 36. Name one vegetation from the following. एक vegetation का नाम बताना है ये सभी ऑप्शन से. ऑप्शन ए हर्ब्स, ऑप्शन बी ट्रीज, ऑप्शन सी स्क्रब्स या ऑप्शन डी प्लांट्स. So the correct answer is option C, scrubs. Question number 37. Where is Amreli located? Amreli कहाँ पे located है? ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया, ऑप्शन बी सौराष्ट्र या ऑप्शन सी इंडोनेशियन या ऑप्शन डी इंडिया. So the correct answer is option B, Saurashtra. Question number 38. The life supporting system is known as. जो वो सिस्टम के अंदर जो लाइफ सपोर्ट करती है वो सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इकोसिस्टम, ऑप्शन बी इकोलॉजिकल या ऑप्शन सी बोथ एंड बी. So the correct answer is option A, ecosystem.
Question number 39. The vegetation are mentioned below, identifying them. जो वेजिटेशन है उनके नाम बताना है नीचे ऑप्शन से. ऑप्शन ए टुंड्रा एंड स्क्रब्स, ऑप्शन डी फॉरेस्ट, ऑप्शन सी ग्रासलैंड्स या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. So the correct answer is option D, all of these. Question number 40. Series of protected land areas linked through global network intended to demonstrate relationship between conservation and development. ये कौन सी चीज़ की डेफिनेशन है? ऑप्शन ए बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी नेशनल पार्क या ऑप्शन सी बोथ एंड बी. So the correct answer is option A, biosphere reserve.